Hey guys, and welcome back to yet another lecture from my channel Interactive Education, and we are back again taking forth the NEET JEE Marathon, in which we were going to discuss organic chemistry and we're going to discuss nucleophilic substitution reactions. So we had already discussed the free radical substitution reactions, and now we're going to go into the nucleophilic substitution reactions, which are a very classic reactions coming from haloalkanes and haloarenes. So without any further ado, let's get started with this very beautiful, essential, and yet a very simple concept. So guys, before we go any further, we must first understand what is the basic molecular thing going on, कि यहाँ हो क्या रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ क्या प्रोसेस है, क्या मतलब बेसिक चीज मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रही है. तो यहाँ पे अगर एक चीज मान करके चलें कि मेरे पास यहाँ कोई कंपाउंड है और ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर ये जो मेरे पास व्हाइट कलर का एटम है, दैट इज माय कार्बन एटम. ये मेरा व्हाइट कलर का जो एटम है ये मेरा कार्बन एटम है. ठीक है, ये वाला जो मेरा एटम है, दिस व्हाइट कलर्ड एटम इज माय कार्बन एटम. ठीक है, और इस कार्बन एटम के आसपास जो जो एटम्स हैं तो उसके आसपास के जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो ग्रुप्स हैं. ठीक है, so now basically what happens in nucleophilic substitution is that one of these groups attached to this carbon atom will literally leave with its bond pair of electrons. तो जो bond pair of electrons उसके पास हैं, उन bond pair of electrons को लेकर के ये निकल जाएगा, और निकलने के बाद क्या होगा, ये एक खाली जगह रह जाएगी which will be taken up by another atom. तो एक another atom आएगा, वो ये खाली जगह ले जाएगा, और क्योंकि वो एटम अपने खुद के भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आएगा, वो उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके बॉन्ड बना लेगा इस तरह से. So this is guys your nucleophilic substitution. So essentially what happened here was कि एक ग्रुप चला गया, दूसरा ग्रुप आया. ठीक है, और यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि वो जो दूसरा ग्रुप गया था, जो पहला ग्रुप गया था, it took its pair of electrons. वो pair of electrons लेकर चला गया था, और इसीलिए इस कार्बन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा. या वो पार्शियल हो सकता है या वो कंप्लीट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है. तो इसलिए क्योंकि ये कार्बन पे थोड़ा पार्शियल या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो नया एटम आता है, ये ब्लू कलर वाला, इसके पास भी एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ताकि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके एक बॉन्ड बना सके. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस स्पीशीज व्हिच इज इनकमिंग इज नेगेटिवली चार्ज्ड, द नेगेटिवली चार्ज्ड इनकमिंग स्पीशीज, एंड दिस स्पीशीज इज देयरफॉर व्हाट वी कॉल अ nucleophile. This is what we call a nucleophile. So that is why, because the group which is being replaced by a nucleophile, by a negatively charged species, that is why this reaction is called nucleophilic substitution. That is why this reaction is called nucleophilic substitution. तभी इस reaction को हम nucleophilic substitution कहते हैं. और ये जो ग्रुप बाहर गया है, निकल गया है, इस ग्रुप को हम कहते हैं leaving group. It is called a leaving group. Why is it called a leaving group? Because it's literally leaving. It is leaving with its lone pair of electrons, with its bond pair of electrons, sorry. It is leaving with its bond pair of electrons and is being replaced by a nucleophile. So nucleophiles are generally represented very casually as Nu-. This is one very common way of representing nucleophiles. Okay? And because this carbon atom is the one on which that nucleophile or leaving group is attached, this carbon is often called electrophilic carbon. This carbon is often called electrophilic carbon, and this electrophilic carbon is also called the alpha carbon, because it is the carbon which is attached to the leaving group of the nucleophile. So basically the reagent we are talking about, the reagents which are more important to us, they are attached directly to this carbon atom, and that is why this carbon is called the alpha carbon. That's how we generally number the carbon atoms or name the carbon atoms. So I hope ये बात आपको क्लियर है कि क्या लीविंग ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो उनमें से कुछ फैक्टर्स को हम जब कंसिडरेशन में लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दो डिफरेंट मैकेनिज्म से होता है. इट कैन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ
substrate. Now type of substrate means ये जो पूरा initial कार्बन का कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपके पास जो सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर सबस्ट्रेट. अब सबस्ट्रेट का क्या टाइप है, मतलब क्या ये कार्बन प्राइमरी है, टर्शियरी है, सेकेंडरी है, उस पर भी डिपेंड करता है कौन सा हम मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. क्या वो न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि यार वो बहुत ही ताकतवर है. इट कैन नॉट stay alone for very long. It has to literally go and attack that particular substrate as fast as possible. वो अपने आप को रोक नहीं सकता, ठीक है. और तीसरी चीज जिस पे वो डिपेंड करता है दैट इज द सॉल्वेंट. वो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट इस रिएक्शन के लिए यूज कर रहे हैं. क्या हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, क्या हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, क्या हम पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड द फोर्थ थिंग विच इट डिपेंड्स ऑन इज अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट factor which is steric hindrance. Now what is steric hindrance? Steer word को मतलब समझो. Steer means to basically move around. अब उस न्यूक्लियोफाइल को आकर के इस कार्बन एटम पर अटैक करना है, तो देयर मे बी सम हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ द एटम्स व्हिच आर अटैच्ड अराउंड द कार्बन. So if that happens, then that is known as steric hindrance, ठीक है. And depending on the steric hindrance also, we will follow or we will see which type of mechanism to follow. Yeah. So basically, these factors determine which type of nucleophilic substitution mechanism is followed. Okay, so take note of these points, guys. Let's now move on to study what are those two different mechanisms of nucleophilic substitution. The first mechanism is called the SN1 reaction mechanism. Now, SN, the word SN simply stands for nucleophilic substitution, but this word 1 stands for the order of this reaction, right? It stands for the order of this reaction. Let's try to first understand how the order of the reaction is 1. Order means that kinetics wala order, ठीक है? First order kinetics, second order kinetics. तो ये basically हमें ये बताता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है, the order of this reaction is 1. This is all it tells us. Okay guys, that is what this reaction is. It is a first order reaction. Now why is it a first order reaction? Let's try to understand that. So suppose आपके पास एक compound है, obviously this is your substrate, and the white colored circle just represents your carbon. So what happens is, if suppose you have a very weak nucleophile, so in that case what would happen is the nucleophile would prefer to wait. It doesn't want to directly attack, it can wait. Okay, so if it is able to wait, then this substrate has to start the reaction itself first, and to make sure that happens, we have to see what will happen. Let's see through an animation that first that bond with that group will break. The bond with that particular group will break. Okay, so your leaving group leaves with its lone pair of electrons, right? Now once that happens, this carbon is left with a positive charge, right? This carbon is left with a positive charge, and since it is now left with a positive charge, we have to see if this carbon can now remain tetrahedral. This carbon can no longer remain tetrahedral क्योंकि अब इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, तो इसको प्लेनर बन जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में चेंज हो चुकी है, ठीक है. तो अब देखते हैं क्या होता है. इसके बाद to make sure that it remains sp2 hybridized and true to its hybridization, this particular substrate changes its shape and now becomes planar. So you can see now it has become a planar structure. ये तीनों atoms अपने bonds को arrange कर चुके हैं और overall अब जो हमारे पास एक intermediate बचा है that has become planar. Leaving group जाने के बाद positively charged carbon atom है जो कि planar हो चुका है, and this planar positively charged carbon वाले intermediate को हम कहते हैं planar carbocation. So this essentially is a planar carbocation. It is a carbocation which is planar, right? It is a planar structure. Basically इसमें कोई भी ऐसी चीज अब नहीं है जो अब इसको tetrahedral बनाए रखेगी. It just has a positive charge on the carbon atom. So because of that, now it is planar. So guys, this is the primary step
of an SN1 reaction. And because this is the main step of the SN1 reaction, क्योंकि ये SN1 reaction का main step है जहां पर leaving group जा रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, इसीलिए इस step को हम rate determining step कहते हैं. So this is the rate determining step of this SN1 reaction mechanism, RDS of the SN1 reaction mechanism. That is the formation of the planar carbocation. Now, since you have to form a planar carbocation with a positive charge on the carbon atom, this involves only the substrate. अभी तक हमने nucleophile की बात भी नहीं की है. So it only involves the substrate, and because of that, when we write the rate law, the rate law will only incorporate the substrate and not the nucleophile. So R is equal to K times concentration of substrate. Now tell me, concentration of substrate की बात की है, so its power is only 1. That is why the order of this reaction is also 1. That is why it's called SN1 reaction, first order nucleophilic substitution. Other than that, it also happens to be unimolecular, because in the rate determining step, we are only involving the substrate. We are not involving any nucleophiles or any other reagents. That's why it's also unimolecular. It also happens to be unimolecular substitution. So I hope it's clear. The molecularity of the reaction is also 1. So hope it's absolutely clear. This is the basic idea of the SN1 reaction, how the main step of the SN1 reaction being the carbocation formation happens. So I hope it's clear. Let's now move on to see what happens in the second step. So you can see we have already passed one step. That means there is another step to this reaction because the nucleophile hasn't come into the picture yet. It's a very weak nucleophile. So it waits for this carbocation to form aram se. And one more thing before we move into the nucleophile. कार्बोकेटायन बना है और इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए कार्बोकेटायन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो SN1 की रिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल. वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन. अगर इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करें तभी हम रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं. तो अगर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है तभी वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट SN1 की तरफ ज्यादा रिएक्टिव होता है. इसी का मतलब क्या होगा, आपको पता है 3 डिग्री जो वो होते हैं कार्बोकेटायंस होते हैं, दे आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायंस एंड दे आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायंस फॉलोड बाय मिथाइल कार्बोकेटायंस. So this is essentially the SN1 reactivity because this is the order of stability of the carbocations. 3 degree carbocation followed by 2 degree, 1 degree and methyl. So since the 3 degree is the most stable carbocation, that is why it is going to be the most reactive towards SN1 reaction when we talk about only alkyl based substrates. अगर वहाँ allylic group आ जाता है, which is basically this carbon attached to a double bonded carbon, या हमारे पास benzyl आ जाता है जो कि मैंने पहले डिस्कस किया है when I was talking about your categorization. So if these type of cations come, these are even more stable than 2 degree carbocations. So in that case, even though they look primary, they have a lot of resonance, especially this benzyl cation has resonance because of which it is more stable than a 2 degree cation. So that is why these things come into play, but regardless, the point is carbocation stability is the major focus area here. Hope it's absolutely clear, guys. Let's now move on to understand the second step of the SN1 reaction. So if you look at the SN1 reaction, we see now we have this planar structure. We have this planar carbocation with a positive charge on the carbon atom. So now the nucleophile which has to come by, now just try to visualize this, right? This is a planar structure. This is absolutely planar, lies in one triangular plane, right? So the nucleophile which has to come by, it can either come from the top like this, and it can either come from the bottom like this, right? So now you would ask me that, sir, how does that really matter? मतलब उसका क्या मतलब क्या है, मतलब ऊपर से आए नीचे से आए कंपाउंड तो एक ही बनेगा ना, they're the same groups. When you talk about like general levels, or like if we see that these atoms which are attached to that main carbon are absolutely the same, in that case it wouldn't matter, right? Or even if 2 of them are the same, it wouldn't matter. But if all 3 are different, as in the case here, they're of different colors, so all 3 of them are different, then the attack or the direction of attack would also make a lot of difference.
So if there is an attack from the top, because there is nothing to stop it, it can come from the top, and there's nothing to stop it at the bottom either, so it can come from the bottom. So if it forms a top attack, then it would form this product. And if it has a bottom attack, then it would form this product. Because then these groups would go in the opposite direction. Same for this, they'd go in the opposite direction. So now if you try to understand this, although they look very similar structurally, the orientation of groups around this carbon atom in both of them are different. The orientation of the groups around this carbon atom in both these compounds is different. But you know what? The attack is of equal probability, so you'll have 50% of this product and 50% of this product, because the attack of the nucleophile is an equal probability from both ways. But you will have to note that even though they look structurally similar, the orientation of groups around that carbon is different. Now this brings us to an essential concept known as optical isomerism. Try to look at these two structures, and in this slide, let's have a look at them like this. They are essentially the two products formed. So this is the first product which we saw in the previous slide, and this is the second product which we saw in the previous slide. I've just tilted it, okay? It's basically the same thing. Now suppose there is a mirror between them. Can you see that these two are exactly mirror images of each other? They are essentially mirror images. And if you note them and see that they are mirror images, you'll also note one more thing, that though they are mirror images of each other, if you literally pick this particular compound and put it on this, literally pick it up and put it here, if you try to do that, they will not be superimposable. That basically means that if you take your right hand and if you take your left hand, sorry, I have horrible drawing, but okay. If you take both your hands and basically you take them mirror images, right? Basically the two are mirror images of each other. Your hands are mirror images of each other. But if you literally pick up your right hand and put it on your left hand, then you'll have one thumb coming out on the left and one on the right. That is, they are not superimposable. So though they are mirror images, they are non-superimposable. You cannot superimpose the two on each other. वो एक दूसरे के ऊपर लगाए नहीं जा सकते. ये प्रॉब्लम है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं, बट आप उनको एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकते. वो पूरे एक दूसरे को पूरी तरह कवर नहीं करेंगे. So these structures whose mirror images are non-superimposable on each other, these structures are said to be chiral structures. These structures are said to be chiral structures. ऐसे structures को chiral structures बोलते हैं. और हमारा जो हाथ होता है, the human hand is a very good example of a chiral structure. So in a similar way, the two products which were formed by front and back attack, they cannot be superimposed on each other, though they are mirror images. And that is why they are said to be chiral. These products are said to be chiral, and these non-superimposable mirror images of a chiral compound are called enantiomers. They are called enantiomers, right? And this phenomenon of the occurrence of enantiomers and chiral compounds is known as optical isomerism. So the basic idea here is the SN1 reaction can produce optical isomers if the groups attached to the main alpha carbon are all different. If they are all different groups, then it can exhibit optical isomerism. For this, that
alpha carbon must be attached to 4 different groups. None of the 2 can be the same. All of them have to be the different groups. That is when you will see enantiomers and optical isomers. So I hope this part is clear, right? And these enantiomers show optical isomerism because this word optical comes from the fact that these 2 compounds can rotate plane polarized light. We have something called plane polarized light, and basically this is light which has been passed through a polarizer and it has vibrations only in one direction. The particles vibrate only in one direction. So if light passes through these compounds, the crystals of these compounds, it will be rotated in different directions, right? So one of them will rotate them to the right while the other one will rotate them to the left, right? The one which rotates them to the right is known as dextroform, dextrorotatory. And the one which rotates them to the left is known as levorotatory, okay? So dextro is called D, small d form, levo is called L form. So DL forms, DL isomerism it's also known as. So that is why they are called optical isomerism. Optics means light. They rotate this plane polarized light with vibrations in one plane only in 2 different directions, depending on the structure. So hope it's absolutely clear, guys, right? That's why they are called optical isomers. So if we have a look at the product mixture after an SN1 reaction in which the substrate was chiral, then in that case, that particular mixture will have an equimolar mixture. It will be an equimolar mixture of D and L. That means there will be 50% D form and 50% L form, right? Now, if you pass plane polarized light through this particular mixture, do you think it will rotate? Obviously, it won't. Why? क्योंकि अगर आप लाइट इसके आसपास गुजारते हो तो D फॉर्म उसको राइट की तरफ रोटेट करेगा, L फॉर्म उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, बट आप देखोगे द राइट एंड लेफ्ट विल बी नलिफाइड. जितना राइट रोटेट होगा उतना ही लेफ्ट रोटेट होगा. तो द नेट रोटेशन इज 0. नेट रोटेशन बिकम 0 क्योंकि जितना राइट पे रोटेट होगा उतना ही लेफ्ट पे रोटेट होगा. और इसीलिए हम ऐसे मिक्सचर्स को कहते हैं, हम ऐसे मिक्सचर्स जहां पर इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ डी एंड एल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर. वी कॉल इट अ रेसिमिक मिक्सचर. एंड बिकॉज इन SN1 reactions you see a racemic mixture being formed, that is why this phenomenon is known as racemization. So one very important point is the process of SN1 reaction mechanism follows racemization. Hope it's clear. It follows racemization. So important points of SN1. It's a 2-step process. There's carbocations being formed. Both side attacks are equally possible, which leads to the formation of an equimolar mixture of D and L forms, provided the substrate is chiral. If it's not chiral, then we don't even talk about this. But if they are chiral, then yes, we'll have equimolar mixtures, a racemic mixture is formed, and racemization happens. So I hope it's absolutely clear, guys. These are some important points of the SN1 reactions, and these are especially helpful when you solve very tricky basic level concepts questions. And I hope it's clear now. Let's now move on to the next very interesting type of reaction mechanism, the SN2 reaction mechanism. So now we come to the SN2 reaction. So if you look into the name again, it is nucleophilic substitution, but this time it is of SN2 type, 2. So the word 2 means it is of second order. It follows second order kinetics. So that means again, other than the substrate, there will be some other species involved in the rate determining step. अब वो क्या species होती है हम उसको जरा देखते हैं. तो देखिए guys, ये मेरा एक compound है. This is my substrate, right? और अब मैं देखने वाला हूं कि अगर मुझे इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो क्या होगा. अब गाइस जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, सपोज हमने पिछले वाले केस में तो हमने वीक माना था, अब मानते हैं कि यार कोई बड़ा दारा सिंह टाइप न्यूक्लियोफाइल आया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया है, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो डायरेक्ट अंदर आ जाता है, डायरेक्ट उस सबस्ट्रेट के पास आ जाता है, और जैसे ही वो सबस्ट्रेट के पास आता है वैसे ही यहां पर वो बॉन्ड बनाने लगता है, आते ही बॉन्ड बनाने लगता है, और जैसे जैसे ये बॉन्ड फॉर्म होता है वैसे वैसे उसका लीविंग ग्रुप के साथ जो बॉन्ड है वो वीकन होने लगता है. सो ऑन वन साइड you can notice now it is not waiting for the leaving group to go, it is just directly coming from the other side, opposite side, back side.
इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बैक साइड, इट इज बैक साइड अटैक, और ये पीछे से आ रहा है, लीविंग ग्रुप को जाने की वेट नहीं करना पड़ रहा, ये डायरेक्ट आ जाता है और लीविंग ग्रुप का आगे वाली साइड से बॉन्ड वीक होने लगता है और पीछे वाली साइड से ये जो आया है इसका बॉन्ड स्ट्रांग होने लगता है. सो दिस इज अ स्पेशल स्टेट विच इज फॉर्म्ड. ये एक स्पेशल तरह का स्टेट फॉर्म होता है गाइस, ये एक स्पेशल तरह का स्टेट फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं. और इस स्पेशल काइंड ऑफ स्टेट फॉर्म को, इस पर्टिकुलर फॉर्म को जहां पर एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है और जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो थोड़े रिपेल होने लगे हैं टुवर्ड्स द बैक, this is known as the transition state. This is known as the transition state. और SN2 reactions में transition state के बनने का process ही आपका rate determining step होता है. So it is the formation of the transition state which is the rate determining step of this reaction. तो देखिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कौन कौन से स्पीसीज हैं. ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है और हमारा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, तो दो चीजें इन्वॉल्व हैं, इसलिए मेरा रेट लॉ होगा R इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन. तो क्या, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? 1 + 1. सो द ऑर्डर is 1 + 1, which is 2. That is why it is a second order reaction. Again, in the rate determining step of the reaction, two species are involved, which is why it is also a bimolecular reaction. The molecularity of the reaction is also 2. So I hope this is clear, guys. This is the transition state. This is the transition state where one of the bonds is being broken with the leaving group. The bond with the nucleophile is being formed from the back. So you guys, ये आगे की बात है, ये पीछे की बात है. So it's coming from the back of the nucleophile, from the other side of the nucleophile, and this, sorry, from the other side of the leaving group, and this is known as backside attack. This is known as a backside attack. It attacks from the back of the leaving group. ठीक है, तो अगर आप इसको देखो, यहां पर वो कोई प्लेनर प्लूनर स्ट्रक्चर नहीं, डायरेक्ट पिछू से अटैक है. ठीक है, तो यहां पर इसके अटैक को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करने वाली हैं? ये जो एक तो जो ग्रुप्स यहां अटैच्ड हैं, ये ग्रुप्स अगर बहुत भारी हैं, भरकम हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो देन इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में मुश्किल होती है. सो गाइज, यहां पर ये जो ग्रुप्स हैं, दे कैन प्रोवाइड रुकावट, ऑब्स्टिकल्स, आपको बाधा डाल सकते हैं, और उस बाधा को हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. उस बाधा को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर SN2 रिएक्शंस इज नॉट कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, इट इज स्टेरिक हिंड्रेंस. आपको देखना है कि जो अल्फा कार्बन के आसपास के ग्रुप्स हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए. अगर वो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं तभी वो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर पाएगा, नहीं तो उसका अटैक करना मुश्किल होगा, तभी SN2 मुश्किल होगा. ठीक है, और अब आप जब देखते हो तो इफ यू सी SN1 में 3 डिग्री वर द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट रिएक्टिव, एंड 3 डिग्री के आसपास बड़े सारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं. लेकिन अगर आप एक CH4 को लेते हो या CH3Cl को लेते हो तो यहां पर तो छोटे छोटे हाइड्रोजन ही अटैच्ड हैं. ये जो स्पीशीज है, इट विल बी वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फर्स्ट ऑर्डर SN1, क्योंकि वहां कार्बोकैटायन मिथाइल कैटायन है जो कि बहुत वीक है, लेकिन वेरी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड. So it will actually be very reactive towards SN2. And similarly, 1 degree will be more reactive, 2 degree will be more reactive than 3 degree. So it will be the reverse of what you did in SN1. So methyl group is more reactive than 1 degree, more than 2 degree, more than 3 degree for SN2 reaction. तो SN2 reaction के लिए steric hindrance बहुत important होती है. जितने छोटे छोटे ग्रुप्स अटैच हैं उतना अच्छा SN2 रिएक्शन के लिए होता है. इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है. ऑब्स्टिकल कम होना चाहिए, इसलिए पिछू से अटैक करना है. दैट इज व्हाई डायरेक्टली आपको उल्टा ऑर्डर मिल जाता है. सो आई होप इट्स क्लियर गाइस, समझ में आ गया होगा क्या SN2 रिएक्शन के बेसिस हो रहे हैं. आगे का भी एनिमेशन देखते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई है. तो अब क्या होगा, साथ साथ मैंने आपको कहा था रिपल्शन हो रही है इन ग्रुप्स की, इन ग्रुप्स को पीछे जाना पड़ रहा है, तो इनके बॉन्ड्स भी रीअरेंज होते हैं, ये पीछे जाने लगते हैं, लीविंग ग्रुप चला जाता है, ये ग्रुप्स पीछे हो जाते हैं, और अब फाइनली आपका जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो आ जाता है और एक नया बॉन्ड बना लेता है. अब यहां पर एक बात नोटिस करिए, यू नाउ हैव अ प्रोडक्ट which is exactly reverse of what you had in the substrate. You have a product
which is exactly reverse of what you had in the substrate. बिल्कुल उल्टे तरीके से ये अरेंज्ड है ना। और मैंने आपको कहा था ये स्ट्रक्चरली लगते तो सिमिलर हैं, लेकिन अब हमें ओरिएंटेशन की भी बात करनी है, क्योंकि अब हम बड़ी क्लास में आ गए, हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की भी बात करनी है, स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में भी बात करनी है। तो गाइज ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी जो ओवरऑल बनावट है, द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट. It is rather opposite to that of the substrate, and because of that, the way in which this particular carbon atom will rotate plane polarized light will be different. It will be reverse in direction. और इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को कहते हैं inverted product. इसको हम कहते हैं inverted product, क्योंकि जो D फॉर्म था वो L हो जाएगा, जो L फॉर्म था वो D हो जाएगा. अब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेगा. तो हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि द कॉन्फ़िगरेशन, जो बनावट है, ओरिएंटेशन है, कॉन्फ़िगरेशन अबाउट अल्फा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन है. So the configuration about the alpha carbon has now changed. It has now changed, right? Orientation has changed, configuration has changed. Now because of that, inverted product is formed, and this process is known as inversion. And what type of inversion? It is like this, कि पहले एक छतरी होती है इस तरह, अब वो छतरी कैसी हो गई है इस तरह, बिल्कुल उल्टा हो चुका है, बिल्कुल उलट चुका है. इट्स लाइक जब बहुत स्ट्रॉन्ग हवा आती है तो उस छतरी को वो उल्टा कर देती है ना. तो सेम वे अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो पूरे कंपाउंड को उल्टा कर देता है. तो ऐसे इन्वर्जन को कहते हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, इट इज कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन. So this is known as Walden inversion. SN2 reaction में Walden inversion होती है, जहां पर there is an inversion of configuration about the alpha carbon. So I hope this is clear guys. Purely एक ही तरह का कंपाउंड बनता है. एक और नोट करने वाली बात, SN1 की तरह 50-50 नहीं है, ये एक ही तरह का कंपाउंड है, क्योंकि एक ही साइड से अटैक हो रहा है, बैक साइड से. फ्रंट साइड अटैक तो है ही नहीं, क्योंकि वो हिंडर्ड है, वहां पहले ही लिविंग ग्रुप है, वहां से लिविंग ग्रुप को निकलना है, तो ये पिछू से वार करेगा, आगे से नहीं करेगा. सो होप इट्स क्लियर गाइस. इसके करके पूरा तरह से इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, या तो सिर्फ D मिलेगा या सिर्फ L मिलेगा. सो आई होप इट्स क्लियर. दैट टू इफ द कायरल कार्बन और दैट अल्फा कार्बन इज कायरल, मतलब इट इज अटैच्ड टू ऑल डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स. अगर उनमें से दो भी ग्रुप सेम है तो ये बात होती ही नहीं है. सिंपल SN2 रिएक्शन होता है, पीछे से आके अटैक होता है. So I hope this part is clear guys. I hope this is absolutely clear. अब हम कंपेयर करते हैं हमारे दो रिएक्शन मैकेनिज्म्स को, SN1 को और SN2 को. एक बार हम रन थ्रू कर लेते हैं. SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में हुआ था. SN2 रिएक्शन और SN1 के दो रिएक्शन स्टेप्स क्या थे? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन था और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक था. SN2 में भाई लीविंग ग्रुप जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल साथ में ही आ रहा है. सो इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन, उसमें दो स्टेप्स नहीं होते. SN1 रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था, हमने देखा है. SN2 रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स था. SN1 रिएक्शन में हमने कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो किया, जहां पर एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, और जितना स्टेबल वो कार्बोकेटाइन होगा, या तो बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि हम आगे देखेंगे, या बिकॉज ऑफ इट्स ओन एबिलिटी, इट विल डिपेंड ऑन दैट, ऑन हाउ फास्ट दैट रिएक्शन हैपेंस. SN2 रिएक्शन की जहां तक बात करें, वो एक ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म से हुआ था, जहां पर कोई आयनिक सोल्यूशन नहीं था, जहां कोई आयनिक इंटरमीडिएट्स नहीं बने थे कार्बोकेटाइंस की तरह. ये सब SN1 रिएक्शन में हमने देखा था रेसिमाइजेशन हुआ था, D और L फॉर्म्स की इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी, जिसके कारण रेसिमिक मिक्सचर बना था. और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, बिल्कुल पूरी तरह एक ही तरह का ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनता है अगर आपका अल्फा कार्बन कायरल है. SN1 की रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल. SN2 रिएक्शन की होती है 1, 2, 3. Why? Simply because of steric hindrance. SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल्स यूज होते हैं, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन तो ज्यादा स्टेबल बनेगा नहीं. यहां पर आपको न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ से बात है, कि न्यूक्लियोफाइल कितना तेज गति से पहले आ सकता है, उस पर डिपेंड करता है. SN1 रिएक्शन में you have to focus on the carbocation stability, and in SN2 reaction you have to focus on the steric hindrance. So I hope this is clear guys. एक और प्रॉब्लम होती है लीविंग ग्रुप एबिलिटी की, कितना फास्ट वो ग्रुप लीव कर सकता है, उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे सम टाइम लेटर. बट दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ SN1 and SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स.
ऑलराइट गाइस, अभी हमने एक चीज मिस की है विच इज द सॉल्वेंट का रोल। एक फैक्टर हमने मिस कर दिया था, देखते हैं सॉल्वेंट के रोल के बारे में। तो जब हम सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, सॉल्वेंट मेनली दो टाइप के होते हैं, या तो सॉल्वेंट पोलर होते हैं, या तो सॉल्वेंट पोलर होते हैं, या सॉल्वेंट्स नॉन पोलर होते हैं। मतलब पोलर नहीं है, उनके बीच में पोलर कैरेक्टर नहीं होता है, दैट इज दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ 0 इन देयर बॉन्ड्स। अब पोलर सॉल्वेंट्स में भी दो तरह के सॉल्वेंट्स हैं, एक होते हैं प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, और एक होते हैं पोलर एप्रोटिक। प्रोटिक comes from the word proton, that means they are able to release H plus in the solution में H plus रिलीज कर सकते हैं, प्रोटॉन्स रिलीज कर सकते हैं। और एप्रोटिक जो होते हैं दे डू नॉट रिलीज H plus, वो H plus रिलीज नहीं करते हैं, वो सिंपली आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो कुछ एग्जांपल्स प्रोटिक के होते हैं अल्कोहल्स, वाटर एक्सेट्रा। तो अल्कोहल्स और वाटर आर टू वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स ये वाले होते हैं आपका DMF which is N dimethyl formamide, then DMAC, DMSO, NMP, sulfolane and diphenyl sulfone. So these are some good examples of polar aprotic solvents. Non-polar solvent CCl4 है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हम कम बात करते हैं, जनरली हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जनरली हम उन रिएक्शंस में यूज करते हैं जहां एडिशन हो रहा है। लेकिन जहां हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें, जनरली हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करते हैं। लेकिन जहां हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट्स में पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक विल डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन वी आर डूइंग। अगर हम SN1 रिएक्शन कराते हैं, तो आपको पता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, और इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उस रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर कोई सॉल्वेंट ऐसा है जो उस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है, देन इट इज वेरी यूजफुल फॉर SN1 रिएक्शन। So now, when can a carbocation, an ionic species, be stabilized? It can be stabilized by another ionic species. And where are these ionic species found? In polar protic solvents. तो अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, तो वाटर हमारे लीविंग ग्रुप, जो अगर ब्रोमाइड अगर हमारा लीविंग ग्रुप है, उसको स्टेबलाइज कर सकता है। हमारे कार्बोकैटायन को सॉल्वेट करके स्टेबलाइज कर सकता है, सॉल्वेशन, थ्रू सॉल्वेशन। This process by which water or solvent molecules surround that basic ionic species and stabilize it, this is known as solvation. तो solvation हो जाती है और आयन stabilize हो जाता है, या तो वो ब्रोमाइड हो सकता है या वो हमारा सबस्ट्रेट कार्बोकैटायन हो सकता है। ठीक है guys? So this way you can see that the solvent molecules can stabilize the ionic species in the reaction mixture. लेकिन अगर हमें कोई ionic species मिल ही नहीं रहा है, जिसके इसमें SN2 की बात होती है, there is no ionic species, क्योंकि कोई आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, हमें ऐसी कोई आयनिक सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है जो इनको स्टेबलाइज करें। सो उस केस में भी हमें पोलर सॉल्वेंट्स ही चाहिए होते हैं, नॉन पोलर जनरली यूज नहीं होते क्योंकि वो फ्री रेडिकल प्रमोट करते हैं। लेकिन जब हम पोलर एप्रोटिक को यूज करें, जो पोलर तो होते हैं बट दे विल नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ आयनिक सॉल्वेशन, सो इन दैट केस polar aprotic solvents are very good because they are polar, they can provide a very good medium for the reaction to occur, but they are not ionic, so they don't need to really solvate anything. So they are present and promote SN2 reactions. So polar aprotic solvents are used in SN2 reactions. Similarly, SN1 reactions में हम polar protic solvents use करते हैं. So these are polar protic solvents, whereas these are polar aprotic solvents, right? So these are the basic solvents used. Polar aprotic in SN2 because there is no need of solvation. Polar protic in SN1 because there is a need of solvation and stabilization. So I hope this part is clear, guys. Hope SN1 and SN2, the basic mechanisms are clear. This is the basic concept of SN1 and SN2, and in subsequent lectures, we'll be covering up questions, beautiful other concepts, and taking forth haloalkanes and haloarenes, because this is now the basic concept on which everything else is based. Everything else is just an application of nucleophilic substitution. Good luck, guys. Stay tuned for the next lecture. Bye-bye, and I hope you're enjoying this series. Do let me know in the comments if you have any questions or queries. Goodbye. Take care. Stay healthy, stay smart, and keep studying. Bye-bye.